क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए सो दैट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x minus 3 and 2 phi is 135 degree. Now angle is given, so we can draw figure like this. Coordinate axis x and y. Line 135 degree बनाती है angle, इसका मतलब है line will be like this. This angle is 135 degree and line L, it passes through 2 points x minus 3 and 2 phi, right? So here we can find slope using angle. So slope of line L is equal to tan 135 degree, and that is equal to tan 90 plus 45. We can write 135 degree as 90 plus 45, and tan 90 plus 45 will be cot 45. Now 90 plus, that means it is, this is 90, this is 0, this is 180. So 135 degree will be like this. So it is in second quadrant. So tan will be negative. So this will be minus cot 45, and that is minus 1. Now the line is passing through 2 points. So we can find slope using 2-point formula. So slope of L equal to phi minus plus 3, minus is plus, and 2 minus x, and here I can write this slope of L is minus 1. So minus 1 equal to phi plus 3 is 8 upon 2 minus x. This implies 2 minus x and 2 minus 1, that will be minus 2 plus x equal to 8. This implies x equal to 10. So this is the required value of x. अगर आपको इस तरह के डाउट्स आते हैं तो हमें बताइए, और इस क्वेश्चन को बार बार नहीं करना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को, सेम डेटा वाले क्वेश्चन को जिसमें नंबर चेंज हो लेकिन बाकी इसी टाइप का हो, ऐसे आप 5 से 10 क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा.